computing or computer science, programming की अगर हम बात करें, so this field of computer science actually solves so many daily life problems. Like if you think from the point of view of a programmer or a software designer, so आप सोचें कि whichever programs or softwares that we are using today, those were those are actually the solutions of so many problems. For example, if we are using some softwares like Microsoft PowerPoint, so there were so many problems for the creation of presentations and so on. उसके solutions दिए किसने? Microsoft PowerPoint software. Okay. If we are using like online food ordering softwares or apps, so online food ordering was a problem, and those problems were actually addressed by such apps and such softwares. ठीक है. In the same way, like online cab booking apps जो है हमारे पास softwares है, this was a problem कि people need to book their online taxis and cabs. So this problem was solved through that software. So actually problem solving इसको इसलिए कहा जाता है because whenever the software is designed, that software, any particular software, that is actually a solution of any of the human problem. हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो, दे आर एक्चुअली सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड दे आर एक्चुअली सर्विंग द ह्यूमैनिटी. ठीक है. अच्छा, अब हमने यहाँ से ऑनवर्ड सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोग्रामर. ठीक है. अब हम सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, PDLC. डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? PDLC कुछ याद आ रहा है बेटा क्या होता है? PDLC हम किस चीज को कहते हैं? अच्छा, इसका एक और नाम भी है बाय द वे हरीम, इसको हम SDLC भी बोलते हैं. चाहे हम इसको PDLC यानी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोले, और इवन इफ वी कॉल इट एज SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो क्या चीज है ये? एनी आइडिया? नो सर. अच्छा देखें, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि क्या चीज होती है PDLC और SDLC. देखिए, PDLC कहें या SDLC कहें, इसका नाम प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो या इसका नाम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो, इन बोथ द केसेस इसके नाम में आ रहा है लाइफ साइकिल. Like in your earlier classes, like in grade 6 or 7, whenever you were studying the subject of science, आपने वहाँ पे frog का life cycle पढ़ा होगा. You might have discussed water cycle or hydrological cycle. So whenever the bird cycle comes, it means we are going to study the steps which are going to take place again and again, and those are the actual stages and phases of that particular process. जब भी हम किसी चीज का साइकिल पढ़ रहे होते हैं, whether it is water cycle or a life cycle of anything, it means कि हम उस चीज के उस process के we are going to see the stages, the processes of that particular thing. ठीक है. अब PDLC क्या है या SDLC क्या है? इसको PDLC भी बोल सकते हैं और we call it as SDLC. So Harim, in simple words, we can say this is the SOP, standard operating procedure, for any programmer. Okay, for any programmer, any software designer. By the way, programmer kahin hum, whether we call it programmer or software designer or software developer, ye ek hi cheez ke different, these are the different names for one thing. So programmer ne, software designer ne, software developer ne, that person is supposed to follow these steps, these stages. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्या है? नंबर 1, फर्स्ट स्टेज इज एनालिसिस. Any programmer who is thinking to develop, planning to develop a software, a program, उसको he must have to follow these stages. इन stages पे क्या क्या होता है वो अभी हम बात करेंगे. First stage is analysis stage. Second stage is the stage of designing. Third stage is the stage of coding. And the fourth and last stage is the stage of testing. ठीक है. अब कुछ नाम याद आ रहे हैं बेटा? हरी? Yes sir. Okay. So these are the SOPs for any programmer. कि अगर let's say if I'm thinking to design a software or a program, I must have to follow these stages. अब इन stages में है क्या क्या? अब जरा इन stages की separately हम बात कर लेते हैं. Let's discuss them in detail. For example, अच्छा, इसकी मैं पहले एनालिसिस पे जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, by looking into these 4 stages, if I ask you, okay, what do you think, any rough idea, like actual program will be made in which of the stage? कौन सी stage पे जाकर actual program will be designed? Analysis, design, coding or testing? In your opinion, what do you think? In which stage, which of the 4 stages, कौन सी stage पे जाकर actual program will be made?
Any guess, rough guess about it? आपके ख्याल में Sir, कौन can सी you स्टेज? repeat your question? I'm saying, what do you think? What's your rough idea? Like, if I ask you, actual program will be made in which of the four stages, out of these four stages, in which stage the actual program will be created? In the coding stage? In the coding, exactly. Very good. In the coding, that is the third stage. In the third stage, the actual program will be created. But before that, we have two other stages as well. That is analysis and design. So let's see what are the components or the steps or the things that need to be discussed in each of those stages. For example, the very first stage is the stage of analysis. Acha, if we talk about the word analysis in general, Arif, analysis means to analyze something, right? In generally, we means analysis, like we are doing analysis means we are analyzing something, we are assessing something. Like when the class was started today, I have asked you some basic questions regarding your background because I was analyzing you and analyzing you and your academic status, current status, right? So in this way, analysis is the stage where the programmer need to analyze few things, and to do analysis and to analyze few things, he has to follow certain steps. For example, the first technique he has to follow is problem identification. So while doing analysis, programmer has to first of all do problem identification. Problem identification means in the analysis stage, whenever any programmer will be thinking to design a software, first of all, the very first thing he will be doing, he will be identifying the problem for which he is going to make or design a software. ठीक है? For example, if I'm going to design a software, for example, something like Panda or something, any food ordering app. So I need to identify the problem first. If for what problem my app will be giving the solutions and in what manner it will be giving those solutions. ठीक है? So सबसे पहली चीज ये कि I need to identify the problem. For example, if let's say the people who are dealing in accounts, they are doing accounts job in different organizations. They need to they suffer a problem. They are facing a problem of managing their spreadsheets. So if the problem is identified, then I can make a software something like spreadsheets or Microsoft Excel. Okay. So if let's say I'm making a software like Paint software, so I will identify that okay, people are facing the problem of doing painting, online painting or painting in the digital form. This is the problem. Like people are not able to draw things on their computer, on their laptop, or on their mobile phone. So first of all, the problem is identified. Then later on, we will be thinking about the designing thing and all. Okay? Is it clear, Arif? Yes, sir. Okay. In analysis stage, the second thing is abstraction. Abstraction means we need to filter the things, the stuff which is the important or the related stuff. We need to highlight, we need to bring it in focus, and we need to discard any non-related stuff. Abstraction means whenever we are planning to design a software, develop a software, so any programmer, first of all, he will be doing the identification of the problem, like what are the problems people are facing for which he is going to design the software. First thing is done in analysis. He has identified the problem. Second thing is abstraction. Abstraction means the programmer will see out of so many things this and these things are required and they are related and they are associated with the development of my software. He will bring that stuff in focus. He will bring that stuff in highlight and discarding any non-related stuff. For example, just take a real life example. For example, before the start of this class, let's say on your table, on your bed, wherever you are taking the class, there were so many stuff was there. For example, books and copies of other subjects like maths, physics, chemistry, they all were there. But once you were about to start taking the class of computer science,
You have discarded all the stuff of the other subjects and you have brought the copy, the book, or the notes of computer science only because you want to focus on the stuff which is related to CS only. This is known as abstraction, where the programmer need to bring the related, the associated stuff in focus, in highlight, and discard any non-related stuff. Is it clear, Hari? Yes, sir. Okay, should we proceed? Yes. Okay, third thing is that needs to be done in the analysis stage is decomposition. Decomposition means the general meaning of decomposition is to break a bigger thing into the smaller parts. Generally, we call decomposition. So when we say the word decomposition means we are breaking something bigger into smaller portions or smaller chunks. यही होता है decomposition. So what a programmer will be doing in the analysis stage when he is saying that I am decomposing the problem, decomposition of problem means a problem is bigger, the task is bigger, but he is going to break it into several smaller segments or portions or chunks. For example, first let me give you a real life example. For example, Hareen, if you people, you and your family is going to arrange a picnic for you and your cousins, right? So arranging a picnic is a bigger task, एक बहुत बड़ा task है, right? So arranging a picnic, अगर ये हम किसी एक को देंगे, whether you are arranging or your parents are arranging, so that will be a tough job for that person कि अगर एक काम ये पूरा का पूरा उस इंसान को दे दिया जाए. But if we decompose this bigger task, if we split this bigger task into several smaller tasks, so that will become easier and we will be assigning them to those several smaller tasks to different persons. For example, arrangement of the venue. You are assigning this small task to one cousin. Then arrangement of the food items. This is another small task. You are assigning this small task to another cousin. Okay. Then arrangement of the transport to reach to the venue. This is another task. This has been given to another cousin. So you are splitting the responsibilities. You are splitting the tasks. So everyone will be focusing on their own separate domain, and eventually the bigger task will be achieved. Right? For example, let me give you another example. For example, if you and some of your friends who are interested in programming, you people are running a software house based on work from home. You are taking orders from any online freelancing website like freelancer.com or fiverr.com. You are taking orders of creating and developing softwares from online website. आप website से order ले रहे हैं, and you are a group of friends. You and your friends are running that software house. अब आपको एक order मिला. You have received an order to develop a software, let's say for a hospital. ठीक है. अब आप क्या करेंगे? You will not be developing that software alone. You will be assigning different segments of that particular software among your group of friends, और आप लोग अलग-अलग domains पे काम करेंगे. For example, if one of the segment of that software is related to the payment and checkout, okay, friend number A is going to work on this portion. One of the segment or the portion of the software is regarding the taking appointment from the doctors online. That portion is that task, that segment of the website or the software is assigned to friend number B. So this is actually known as decomposition, where you are actually splitting a bigger task into the smaller ones. Is it clear, Hareen? Yes, sir. Okay, Hareen. If you are clear in all these three techniques or the parts used in the analysis stage, can you give me one line answer, one line feedback regarding all three of them in your own wording? क्या आप अपनी wording में मुझे बता सकती हैं, but you have understood regarding all three of them. What is problem identification, abstraction, and decomposition? Try to tell me in your own words whatever you have understood out of my explanation. तो आपको समझ आया? Try to tell me in your own wording. What is problem identification first? Problem identification, when you identify the problem that you're trying to solve with your code. Exactly. Then what is abstraction? Abstraction means? Getting out the main points, what you're going to do with your code. Exactly. And discarding any non-related stuff. Okay, fine. And decomposition means? Breaking it down into easier
smaller parts that can be solved easily. Yes, breaking a bigger or complex problem or task into the smaller or manageable portions, right? Okay, this was all about the first stage of PDLC, which was analysis stage. Now let's discuss the second stage, which is the design stage. Second stage of SDLC or PDLC is the design stage. Okay. As I have asked you in the beginning, like at which stage the actual program will be created, and you have rightly said that third stage, which is the coding stage, actual program will be developed at the third stage. So design stage means whatever we will be discussing in the design stage, those will be the different ways or the forms or the methods of designing a plan. So this is the second stage, design stage, where the programmer will make a blueprint or the sketch or the plan of the actual software which he is going to develop in the third stage of coding. But before that stage, in the design stage, he is sitting and he is taking all the three forms that we will be discussing in the design stage. They will be formed on a piece of paper. You need to first of all clear in this, Kareem, okay, whatever we are discussing in the design stage, all three forms that we will be discussing, they will be put on in the, they will be written, they will be drawn in the on a piece of paper. Means at the designing stage, up till now, no programming language will be involved. यहाँ पर भी कोई programming language involved नहीं होगी. एक मिनट बेटा मुझे दीजिएगा. Let me attach the charger of the laptop. Okay, sir. So before that, you can tell me anything that you recall, like what are the three different things, three different forms of design stage, like In programmer. design stage, we use structure charts, flow charts, and pseudocode. So जो हम on piece of paper बनाने की बात कर रहे हैं designs को, so वो तीन possible forms हमारे पास होती है. There are three possible forms. Let me write the names of those three. First, I'm writing pseudocode. Most of the students find difficulty in writing pseudocodes and the pseudocode related topics. Second one is the flowchart. Pseudocode is the main problem. Okay, okay, don't worry. And C is structure chart. तो हम ज्यादा बात और यूं समझ लें कि इन द कमिंग क्लासेस वी विल बी डूइंग द pseudocode टॉपिक्स फर्स्ट. ठीक है, मैं आपको जो जो चीज बच्चों को स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रही होती है, हम वो पहले कर लेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग एंड वी विल बी कंप्लीटिंग एंड कवरिंग मोस्ट ऑफ द pseudocode related मेन टॉपिक्स फर्स्ट इन द कमिंग वीक्स. ठीक है ना. अच्छा, डिजाइन स्टेज में हमने कहा कि these are the three possible forms of any design made by any programmer who is planning to create or develop a software. अच्छा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं pseudocode. अगर हम इसके नाम की बात करें, if we talk about the name of this type of design, which is pseudocode. Pseudocode का मतलब क्या है? What is the meaning of this word itself? Yes, beta, I'm back. So I was asking, what is the meaning of the term pseudocode? It's kind of Wait a second. We were here. Achha. Actually, Harim, the word pseudocode is actually a combination of two words, pseudo and code. Okay, pseudo कहते हैं something which is look alike of, or you can say copycat. ठीक है, pseudo code का मतलब क्या होता है? Pseudo means look alike, a copycat, and code is coding. So pseudo code is actually a look alike or a copy code of coding. Pseudo code is not the actual coding. जैसे हमने कहा कि we will be doing coding, any programmer will be doing coding in the third stage, which is the stage of actual coding, where any of the programming language will be used. So before that, if in the design stage pseudocode is written, so pseudocode is just a look alike and the copycat of coding.
and it just resembles like the coding, but it is not at all the actual coding. ये बात हमें clear होनी चाहिए, ठीक है? And since it is the copycat of coding, so it means we are not at all bound to follow any rules and any syntax of any of the programming language. Okay, we need to be clear in this. So then what is pseudocode and how it is written? Pseudocode is just written in the simple English that we are using in our reading and writing from so many years. ठीक है, ये simple English में लिखा जाता है, ये चीजें तो आपको clear. अच्छा, so since you are saying you have confusions and you are not clear in pseudocode, so before I discuss the rest of the stages, को मैं थोड़ा सा आपसे भी डिस्कस बाद में कर लूंगा. पहले मैं आपसे pseudocode थोड़ा सा आज ही से हम स्टार्ट कर लेते हैं. Is that okay, Hadi? Okay, sir. Okay. अच्छा, अब ये देखिएगा कि pseudocode की जब हमने बात की and we are saying, अच्छा, by the way, tell me, are you okay if I continue as bilingual or you are just comfortable in English? I am fine with how you're going. Sorry. It's fine with the way you're going. So whenever we write pseudocode, it means we are writing the sketch of the program that we are going to develop later on in the form of coding. So pseudocode, it means we are writing it in the simple form. For example, if you have to make a cup of tea, so you will be making and you will be preparing the cup of tea later on in the kitchen. But if you are writing the pseudocode of making a cup of tea, it means you will be just listing down, you will be just jotting down the steps of making a cup of tea, and you are writing it in the simple English. For example, first step is take a teapot. Second step is pour some water in it. Third step is boil the water. Then put some tea in it. Then add some milk and sugar. So these are the simple steps. Whenever you are telling the simple steps in the simple wording, in the simple English, it means you are writing its pseudocode. अब हम एक example question लेते हैं, and then we will see what are the different things and the topics and the concepts that needs to be covered while writing pseudocode. For example, if I write this question over here, बहुत basic सा एक question मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. Let's say write pseudocode for a program that takes input of two numbers and calculate and output its sum. Yes, beta. So we have this question, we have this task that write a pseudocode for a program that takes input of two numbers and calculate and outputs its sum. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. दिस इज द टास्क गिवन टू अस. अब हमें इसके लिए pseudocode लिखना है. तो सबसे पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिवाइज एंड डिस्कस इज, सबसे पहले whenever we start writing the pseudocode for any program, whether it is the very basic one, चाहे वो बहुत आसान हो, whether it is a kind of bit difficult, we need to first of all declare the variables and the constants involved in that question. So अब मुझे यहाँ पर यानी आपको रिकॉल करवाना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट. तो मैं एक साइड पे चीजें लिखता जा रहा हूँ. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. फॉर एग्जांपल, हमें सबसे पहले रिकॉल करना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेशन. यू माइट हैव हर्ड दीज टर्म्स. डिक्लेरेशन हमें पता होनी चाहिए. ऑलराइट, हैव यू हर्ड दीज वर्ड्स? Yes, sir. We need to revise what is initialization. ठीक है, we need to revise data types. We need to revise how to write some basic commands like taking input and giving output. How to write some formulas like some working, which we call as processing. Okay, so we need to revise these things. So first of all, we are going to declare some variables. अच्छा, declaration में साथ साथ हमें ये भी देखना होगा हरीम कि what is the difference between variables and constants. All right, variables and constants का भी हमें difference देखना होगा. So हमने कहा कि we are about to declare variables or constants involved in this question.
So Harim, tell me very frankly, are you clear in the concept of variables and constants? What are they and how they are different from each other? Yes, sir. जी बताइएगा, पहले तो बताएं what are variables and constant, what is common among these two, इनमें common चीज क्या है variables and constants, what is the similarity? Sir, a value is one that represents like a number, a value that can keep on changing, whereas constant does not Yes, you are change. yes, you are defining variable and constant. You are saying you are actually telling difference of these two. कि आपने कहा कि variable is something whose value is not fixed, whose value can keep on changing during the execution of the program at any point of time. That is variable, and if the value is fixed, that is known as constant. So you are telling the feature or the difference among these two. But what is the similarity? I have asked you the similarity बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है They both are वेरिएबल में? given names or symbols. अच्छा, एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, जो बेसिक चीज है हरीम, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर द, these are actually data storage containers. You always need to remember them as data storage containers. ठीक है, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, these are the data storage containers. If the values are going to be changed in those containers, we call them as variables, and if the value is going to be remain same or fixed or permanent, we call them as constant. ठीक है, so whenever we start writing pseudocode for any of the objective which is given to us, we first of all think and decide, okay, in this particular problem, in this particular question, which variables will be involved, and then we will be deciding their names. फिर हमें उनके नाम रखने पड़ते हैं. For this case, for this scenario, can you tell me which variables should be there and what should be their names? नेमिंग की फिर मैं आपसे बात करूंगा, बिकॉज हमें वेरिएबल्स हो, कॉन्स्टेंट्स हो, या हम एरेज पढ़ रहे हो, 1D एरे 2D एरे, हम उनके जब आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं हरीम, एक तो ये चीज हो गई. उसके बाद एक चीज और मुझे आपको बतानी है कि आइडेंटिफायर्स जो क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स के नेमिंग के रूल्स क्या है. डू यू नो व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? Like the name of the variable that is able to identify यस, it. देखिए आइडेंटिफायर्स कहते हैं चाहे आपके पास वेरिएबल्स हो, वेदर यू हैव कांस्टेंट्स, वेदर यू हैव 1D एरे, वेदर यू हैव 2D एरे, वेदर यू हैव प्रोसीजर्स और फंक्शंस, उनके जो नाम होते हैं वी कॉल देम, टेक्निकली वी कॉल देम एज आइडेंटिफायर. लाइक फॉर एग्जांपल, हम में से हर किसी का एक नाम होता है. आपका नाम हरीम है, मेरा नाम दानिश है, ये हमारे आइडेंटिफायर्स हैं एक तरह के. We are actually got identified whenever our name is being called by any of our family member or friend. हमारे नाम जब कोई लेता है तो हम आइडेंटिफाई, हम पहचाने जाते हैं. इसी तरह से हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के जो नाम होते हैं, दे आर नोन एज देयर आइडेंटिफायर्स. बट उनके नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, आइडेंटिफायर सेटिंग के कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल्स क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप मुझे ये बताओ कि विच ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या लगता है आपको? num1 and num2. एग्जैक्टली exactly. हमारे पास दो कंटेनर्स, दो वेरिएबल्स होने चाहिए. वन फॉर नंबर 1, नंबर 2, num1 कह दे, num2 कह दे, एंड वन शुड बी फॉर, तीसरा वाला किस चीज के लिए होना चाहिए और उसका क्या नाम होना चाहिए? थर्ड वन शुड बी Sum. सम. आप उसको सम नाम दें, आप उसको टोटल नाम दें. थर्ड वेरिएबल शुड बी सम और टोटल. ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से इनकी डिक्लेरेशन. मैंने लिखा डिक्लेयर. अच्छा, एक बात याद रखिएगा हरीम, कि विच एवर वर्ड्स वी आर राइटिंग इन सूडो कोड इन ऑल कैपिटल, इन ऑल कैप्स, दे आर नोन एज, उनको हम क्या कहते हैं? एनी आइडिया? Like you will notice while writing the pseudocode, I will be writing some words in all caps. आप नोट करेंगी, आपने अपने और टीचर्स को भी नोट किया होगा कि कुछ वर्ड्स को ऑल कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है. Why? Because they are known as the keywords. So ये अपने पास कहीं लिख लें as lecture point कि the words which are written in all caps in pseudocode, they are known as the keywords. वो keywords कहलाते हैं. Okay? So मैंने लिखा declare, then I'm writing the name of my first variable num1, comma num2, comma sum,
then I can write as, or even I can put colon, and then I need to write the data type. अच्छा, इसमें ये मुझे बताइए, डेटा टाइप्स में आपको रिवाइज करवा दूं. कैन यू नेम द ऑल द टाइप्स, डेटा टाइप्स नेम, कौन कौन सी डेटा टाइप्स है हमारे पास हरीम? There's integer, string, boolean, यस. अच्छा देखिए, इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स फर्स्ट, अगर हम नंबर्स वाली डेटा टाइप्स की बात कर लें, सो वी हैव इंटीजर. ठीक है. real, अच्छा, इंटीजर इज फॉर व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स? normal numbers. For whole numbers, numbers having no decimal part in them. जो नंबर जिनमें कोई डेसिमल पार्ट ना हो, फॉर सच नंबर्स वी यूज इंटीजर डेटा टाइप. एंड रियल इज फॉर नंबर्स which can have decimal part in them. ठीक है. And then what about char or character? Character is for what type of alphabets or characters? Character wherever we need to have any one single character. सिर्फ एस लिखा हो, जस्ट एम लिखा हो, तो करेक्टर. और चार इसकी फुल फॉर्म है, इट्स फुल फॉर्म इज करेक्टर, एंड इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एज चार. एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज String is for words. for words, or you can say multiple characters. And what about boolean? Boolean is for true or false. True or false, or just yes or no. ठीक है. Whenever we have only two possible outcomes, we use the data type of boolean. ठीक है. So हम declare कर रहे थे अपने variables को. So in this case, which data type should be assigned to all these three variables, num1, num2 and sum? What do you think, Harim? कौन सी data type हम इनके लिए रख दें? Integer. Integer. We are assuming कि ये सारे numbers जो हैं ये whole numbers होंगे. So we are assigning integer data type to them. अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं हरीम आपको, वो ये कि you are looking right now कि मैंने I have declared all three variables in one line. Can you tell me in which scenario we need to declare some variables in one line and some variables in a different line? वो कब हम करते हैं? When there are the data type is different. Exactly. Let's say I have, let's say, 5 variables in total in my program, and let's say 3 of them are of integer data type and 2 of them are of, let's say, real data type. So I will be declaring the variables of same data type in one line by putting commas, and the data type variables of different data type, they will be coming into the next line. Okay, since all these three are of the same data type, that is why I have declared them in one single line. Okay, moving on to the next step, which is, अच्छा हाँ, मुझे आपको एक और चीज यहाँ पे रिकॉल करवानी थी, आइडेंटिफायर नेमिंग के रूल्स. व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेमिंग द आइडेंटिफायर्स? जी, डू यू रिमेंबर फ्यू ऑफ द रूल्स? अरे कुछ रूल्स याद है बेटा कि व्हाट थिंग्स वी नीड टू कंसीडर while we are setting the names for our variables or constants or arrays? कौन सी चीजें हमें याद रखनी होती है? What rules or guidelines we need to follow? No, sir. अच्छा देखिए, first of all, the very first rule is that any variable or constant or any identifier cannot start with a digit. ठीक है. Digit से शुरू नहीं हो सकता. Digit can come in middle or in anywhere in the ending or somewhere like that. But capital letter, sorry, digit cannot be, number cannot be in the beginning of the name. For example, मैं one num नहीं लिख सकता. I can write num1. ठीक है. नंबर जो न्यूमरल पार्ट है, डिजिट पार्ट है, दैट कैन नॉट कम इन द बिगिनिंग. पहला रूल तो ये. सेकंड रूल इज वी कैन नॉट गिव स्पेसेस. हम स्पेसेस नहीं दे सकते. गॉट इट? अगर हमें स्पेस देना भी है, इफ वी नीड टू यूज टू डिफरेंट वर्ड्स, देन व्हाट वी कैन पुट इन बिटवीन दोस टू वर्ड्स, वी कैन पुट अंडरस्कोर. ठीक है, बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? We cannot use digit in the beginning of the name. We can use it in any other point of time, but not in the beginning. ठीक है, we cannot give space. If we have to separate two words, we can put underscore. Getting it, Hari? बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा. Third Yes, rule sir. is that the third and very important rule of naming the identifiers is that names should be meaningful and relatable. ठीक है. Names should be meaningful and relatable. What does it mean? Like whenever I see or any person see any name of any variable, so उसको नाम देख के पता चल जाए. The name should be very much obvious कि उसको पता चले कि what is saved inside this variable. Like num1 को देख के पता चल रहा है कि this is for number 1.
num2 को देख के पता चल रहा है कि this is for number 2. Some name is already telling कि some will be saved inside this variable. So name should be very meaningful and relatable. ठीक है, and abbreviations are not at all encouraged to use. For example, मैं सिर्फ n1 लिख दूं, so it is not recommended. It's better कि मैं मेरे नाम वेरिएबल के नाम को पढ़ के थोड़ा बहुत तो आइडिया हो कि इसके अंदर क्या चीज सेव हो. ठीक है, अच्छा अगली चीज पे हम चलते हैं, दैट इज इनिशियलाइजेशन. So what is initialization? What is the purpose of it? What is the logic behind doing this step and how we do it? Ji, Harif, any idea, beta? Sir, can you What is the repeat? need of doing this? I'm asking. I am asking about initialization. What is the logic behind doing this step and how this is done? क्यों करते हैं हम initialization? What is the purpose behind and how it is done? दो बातें बताइए. Uh, Are you asking from ChatGPT? no, sir. The voice of keyboard typing was coming there. Was asked. Sir, I have So, told you. अच्छा इनिशियलाइजेशन करते कैसे, चले पहले मैं आपको वो करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी राइटिंग num1, I can put is equals to or I can put this and then I will write 0. What we call this? इसको क्या कहते हैं हम? This one. This is known as Equal to. this serves as equals to, but this has a separate name. इसका एक अलग नाम है. We call it as assignment operator. This serve as equals to, but its name in pseudocode is its name is assignment operator. इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि whatever is written on the right side of this assignment operator, let's say 0 is written in this case, this 0 is assigned to whatever written on its left hand side. ठीक है, इस एरो के, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो कुछ लिखा जाएगा, that will be assigned to what is there on its left hand side. So 0 value is given to the variable named as num1. Getting it? Okay. So we have initialized our first variable, which was num1. Then in the same way, we will initialize num2 with the value of 0 and sum also with the value of 0. So this is the way to initialize any variable, but the second question remains the same. Why we are doing this? What is the reason behind doing this step? Any idea, any guess you want to make? No. अच्छा देखिए, इनिशियलाइजेशन की रीजन क्या होती है, पर्पस क्या होता है. पर्पस ये होता है हरीम, इनिशियलाइजेशन मींस वी आर गिविंग द स्टार्टिंग और इनिशियल वैल्यूज टू आवर वेरिएबल्स. वी आर गिविंग स्टार्टिंग और इनिशियल वैल्यूज टू आवर वेरिएबल्स. हम अपने वेरिएबल्स को या इवन कांस्टेंट्स भी हैं, हम उनको इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यूज दे रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज दिस स्टेप इज नोन एज इनिशियलाइजेशन. When we are giving the initial values to our variable, hence we call this step as initialization. We cannot leave our variables just empty at the beginning of the program. So that is why we are supposed to give them their initial values. We need to tell our program explicitly. हमें खास तौर पर उनको बताना पड़ता है कि right now at the beginning stage of the program, which value they are holding inside them. Since the user has not given any number 1, क्या user ने कोई number 1 दिया अभी तक? No. So num1 variable is empty. That is why we are giving initial value as 0. Has any user has given number 2 so far? क्या किसी user ने आके number 2 बताया कोई भी? हरीम? No. So far, no user has not given, any of the user has not given number 2. So number 2 variable should be empty. That is why we are giving the value of 0 as initial value. ठीक है, right now no sum is calculated so far. अभी तक कोई sum भी calculate नहीं हुआ. That is why the sum variable is also empty. That is why we are initializing it with the value of 0. Got it now? Is it clear, Hari? Yes, sir. This is the logic behind doing the step of initialization. Like if anyone asks you why are you doing initialization, so you should tell them promptly that initialization is the stage, like we cannot leave our variables or constant empty, so we give them the starting or the initial values
That is why this step is known as initialization. And what in the case of constants, let's say, how do we initialize constants? क्या constants को भी हम zero से initialize करेंगे? No. Then how can we initialize any constant? For example, if you are given with a question, let's say, okay, ask the user about how many dollars does they have. User से पूछे कि उसके पास कितने US dollars हैं and convert it into Pakistani rupees. All right. और उन्होंने सवाल में आपको खुद बता दिया कि use the currency exchange rate as $1 is equals to, let's say, 280 rupees. They have told you inside the question that $1 is equals to 280 rupees. Now ask the user how many US dollars does he has, and then convert the number of dollars he has into Pakistani rupees. And साथ उन्होंने खुद बता दिया कि the currency exchange rate for today is $1 is equals to, let's say, Pakistani 280 rupees. So now this dollar rate is given and provided in the question. So we will declare it as a constant, and while we will be doing its initialization, हम उसको zero से initialize नहीं करेंगे. Dollar rate या जो भी हमने उसका नाम रखा, हम उसको उसी value से initialize करेंगे which is given inside the question. We will initialize it with 280 rupees or whatever value is given. बात समझ आ रही है बेटा? हरी? Yes. The initialization of any constant will always be done with that specific value which is given inside the question, or let's say if it is universally known value. For example, maths में pi एक चीज होती है ना, pi. What is the value of pi? 3.14. 3.14. Yes. So let's say if you are writing a pseudocode of any such question where pi is involved in the formula, so you will be declaring pi as a constant. आप उसको constant के तौर पे declare कर देंगे, and then इसकी initialization में you will never write zero. You will write pi is equals to 3.1. जो उसकी specific value है आप वो लिखेंगे. This is for constant. Are you clear in this? Yes, sir. चलिए अब आगे चलते हैं. हमने डिक्लेरेशन की बात कर दी. वी आर डन विद द इनिशियलाइजेशन. अब हम बात कर लेते हैं सम बेसिक कमांड्स, और वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले इनपुट कमांड. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे ऑफ राइटिंग द इनपुट कमांड? इनपुट कमांड को लिखने का सबसे सिंपल वे कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमें बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल डू डिसाइड कि हमें यूजर से क्या क्या इनपुट लेना है. अभी राइट नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूजर टू गिव इनपुट. हम उससे क्या इनपुट लेने जा रहे हैं? जी हरी, बताइए बेटा. In this particular question, where it was given as objective to us, like take input of two numbers and calculate their sum. So we are supposed, our program is actually supposed to take input of two numbers. So कैसे ले? How can our program take input of two numbers from the users? What we need to write in pseudocode. Input command कैसे लिखते हैं ये आपको आता है बेटा? मुझे बता दे हरी, अदरवाइज मैं शुरू से बता देता हूँ आपको. जी हरी बेटा, अगर आपको इनपुट कमांड लेने का मेथड पता है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं शुरू से बता देता हूँ आपको. मुझे अनम्यूट करके बताइएगा बेटा. जी बेटा. So Sorry, I sir, was there was an internet problem. okay बेटा, no problem. I was asking, okay, do you know how to write input command? No. ओके चलिए मैं आपको जल्दी से अब इनपुट कमांड लिखने के दो या तीन जो पॉसिबल वे है वो बता देता हूँ, जरा देखिएगा. अच्छा, इससे पहले मैंने ये बात की थी कि आर यू क्लियर कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी हैव टू टेक इनपुट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, हमारे प्रोग्राम ने, आवर प्रोग्राम इज सपोज टू टेक इनपुट ऑफ टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर, ताकि वो उनका फिर क्या कैलकुलेट कर सके, सम या टोटल निकाल सके. ओके, आर यू क्लियर इन दिस ऑब्जेक्टिव? Yes.
अच्छा, अब इनपुट कमांड के दो या तीन पॉसिबल फॉर्म्स क्या हैं, मैं आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे भी बता देता हूँ और जो रिकमेंडेड फॉर्म है वो भी बता देता हूँ। देखें हरी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म तो ये होती है कि आई हैव रिटन द कीवर्ड ऑफ इनपुट, मैंने कीवर्ड लिखा इनपुट का, सिंस इट इज अ कीवर्ड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट इन ऑल कैप्स, क्योंकि ये कीवर्ड है तो मैंने इसको ऑल कैप्स में लिखा। इनपुट लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर वेरिएबल का नाम, दैट इज num1 and num2, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। अच्छा चले, मैं अगर num2 को इरेज भी कर दूं अभी, जस्ट मैंने लिख दिया num1 इनपुट के साथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे num2 का इनपुट लेना है, सो आई विल राइट द कीवर्ड ऑफ इनपुट अगेन, देन आई विल राइट द वेरिएबल ऑफ सेकंड वेरिएबल नेम ऑफ सेकंड वेरिएबल, दैट इज num2, सो इनपुट num1 इनपुट num2, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म। ये जो फॉर्म मैंने लिखी, दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द इजीएस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, जब जब आपने इनपुट लेना हो, यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। मैं आगे बताऊंगा कि व्हाई दिस इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, अब मैं इसका सेकंड फॉर्म लिख रहा हूँ, वो जरा देखिएगा, सेकंड वे लिख रहा हूँ इसका इनपुट लेने का। सेकंड वे इज, first I have used the command of output, then I have written a message in inverted comma, मैंने मैसेज लिखा, enter first number इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आउटपुट कमांड की ये नेचर होती है हरीम कि वेन एवर वी राइट द की वर्ड ऑफ आउटपुट एंड देन विच एवर वर्डिंग वी राइट इन साइड द इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज जस्ट डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन एज इट इज। आउटपुट के कीवर्ड के साथ आई एम रिपीटिंग, whichever wording we will be writing inside the inverted commas, inside the speech marks, that wording will be displayed to the user on the screen as it is। ठीक है, सो मैंने आउटपुट का कीवर्ड लिख के उसको मैसेज दिया, इसको टेक्निकली कहते हैं आई हैव गिवन प्रॉम्प्ट टू द यूजर। मैंने यूजर को प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया, क्या प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया कि एंटर फर्स्ट नंबर, देन आई विल राइट द कमांड ऑफ इनपुट। अब मैं लिखूंगा इनपुट नंबर। ठीक है, so this is the second way of taking input and this is the recommended form. Why this is recommended? Because in this method user is being provided with complete information which thing he has to tell to the program। जैसे मैं आपसे आपका नाम पूछा मैंने, तो मैं आपसे पहले आपका नाम पूछने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ बोलूंगा ना कि अपना नाम बताएं या टेल योर नेम या व्हाट्स योर नेम। आपसे ये मैं कहे बिना, आपसे ये कहे बगैर, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि आप खुद ही से एज्यूम करके मुझे अपना नाम बता देंगी? दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोवाइडेड द आउटपुट टू द यूजर। हमने यूजर को प्रॉम्प्ट दिया, क्या प्रॉम्प्ट दिया? एंटर फर्स्ट नंबर, वी कैन राइट प्रोवाइड फर्स्ट नंबर, वी कैन टेल गिव फर्स्ट नंबर, हमने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, देन वी हैव यूज द कमांड ऑफ इनपुट। इज इट क्लियर हरी? यस सर। अच्छा, देयर इज थर्ड फॉर्म एज वेल। इनपुट लेने का एक तीसरा थर्ड मेथड भी है, वो भी देख लें। इनपुट लेने के लिए थर्ड फॉर्म ये है कि मैंने लिखा इनपुट का कीवर्ड, देन आई हैव स्टार्टेड राइटिंग द मैसेज, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन आई विल पुट कॉमा and after comma I will write the name of the variable where that number will go and save। So this is the third form। So Hareem, मैं इस third form को पहले थोड़ा explain कर दूं। In the third form, first of all I have written the keyword of input, okay, then the message is coming, the prompt is coming, उसको message जा रहा है user को, enter first number, then after comma the name of variable is written where whichever number he will be giving as input as number 1 वो जाकर इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सो ये जो सेकंड मेथड है हरीम, दिस वन and this third method, these both of these two methods are actually recommended for taking input। Why these are recommended? Because in both of these methods you can notice that prompt is there, prompt लिखी हुई आपके सामने। all right, नजर आ रही है बेटा? Is it clear हरीम? In the first method, although that is also correct,
इवन इन द मार्किंग स्कीम्स अगर आप उठा के देखेंगी अपने ओ लेवल्स की, तो मार्किंग स्कीम्स में भी आपको ये शॉर्ट मेथड मिलेगा, ये वाला कि जस्ट इनपुट लिखा और नंबर लिख दिया, दैट इज ऑल्सो ओके। वो दिस इज नॉट इनकरेक्ट, ये गलत नहीं है, ये इनकरेक्ट नहीं है, बट ज्यादा रिकमेंडेड ये है, स्पेशली इन डिटेल्ड क्वेश्चन, स्पेशली इन द 15 मार्क क्वेश्चन जब आप करेंगी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, या छोटे क्वेश्चन भी करें, इट इज रिकमेंडेड कि आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्म ऑफ इनपुट कमांड यूज करें। इज इट क्लियर? आगे चलें। ओके सर। तो हमने इनपुट ले लिया, अब जैसे हमने इनपुट लिया फर्स्ट नंबर का, अब हम सेकंड नंबर का इनपुट लेंगे। मैंने लिखा इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ये मैसेज किया उसको, ठीक है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा हमने लिखा, देन आफ्टर कॉमा आई विल राइट द नेम ऑफ वेरिएबल जिसमें जाकर दूसरा नंबर सेव होगा, एंड द नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज num2। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया तो अरीन पूछ लो बेटा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये बेसिक बेसिक चीजें जो हम आज कर रहे हैं या शुरू की अर्लियर क्लासेस में करेंगे, इनमें कोई कंफ्यूजन लेकर आपने आगे नहीं जाना, अदरवाइज आप आगे की चीजों में फिर और कंफ्यूज रहोगी। So if you face any problem, any confusion in understanding these concepts with me, so do ask me as many time as you want, ठीक है? लेकिन कंफ्यूजन हो और आप ना पूछो और हम आगे चले जाएं, फिर वो आगे की चीजें आपको और मुश्किल लगेगी, ठीक है? सो आई एक्सपेक्ट कि जो भी प्रॉब्लम हो आप साथ साथ पूछ लिया करें, सही है अरीन? ओके सर। ओके बेटा, सो क्लियर हो गया कि हाउ वी हैव टेकन इनपुट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर फ्रॉम द यूजर। इज इट क्लियर? यस सर। देन व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, उसके बाद क्या किया जाए? यूजर से हमने पहला नंबर भी इनपुट ले लिया, वी हैव टेकन द इनपुट ऑफ सेकंड नंबर आल्सो फ्रॉम द यूजर, देन व्हाट शुड बी डन विद दोस टू नंबर्स? They should be added together. Added, yes, some logic should be written, some statements of pseudocode should be written that should be adding those two numbers and saving the result in the variable named as sum। अब हम वो लाइन लिखेंगे दैट इज नोन एज द प्रोसेसिंग। अब जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू num1 plus num2। Okay, so this step or this stage is known as the stage of processing। Processing means we are applying formula, we are doing working, so this step is known as processing। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हरीम वो ये कि विच एवर नेम्स वी आर यूजिंग एट द स्टेज ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करते वक्त इधर देखें, लेट्स से हमने इनका नाम रखा था num1 num2 और sum, इन तीन वेरिएबल्स के हमने यही नाम रखे थे, ठीक है? और अगर हम इनके नाम आगे जाकर ड्यूरिंग द एनी अदर लाइन ऑफ द सेम प्रोग्राम, इफ वी यूज एनी डिफरेंट नेम फॉर दोज वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे सम डिक्लेयर किया था, इफ आई यूज टोटल ओवर हियर तो क्या होगा बताइए? सम मैंने If डिक्लेयर give a किया wrong था, answer, is the yes, the value value will not not be. be saved, the total the sum of num1 and num2 will save nowhere, वो कहीं जाकर सेव नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कि we should remain constant, we should remain consistent in the use of the names। जो नाम हमने ऊपर डिक्लेयर किया, जो नाम हमने ऊपर इनिशियलाइज किया, we are supposed to use the same names during the whole program of the same question, ठीक है? अच्छा जी, sum is equals to num1 plus num2 लिखा। तो अब मुझे बताएं हरीम कि इस आवर क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड ओवर हियर, इज इट डन और नॉट? ये बताएं मुझे। No, it's not So done. which step is missing? An output to display the Output is output. missing, yes। Up till now the program has although the program has calculated the sum, but user is interested in the in looking into the result, the calculation, so we show the result using output command। इस तरह इनपुट कमांड को लिखने के दो या तीन पॉसिबल फॉर्म्स थे, शॉर्ट मेथड भी मैंने आपको बताया और लॉन्ग मेथड भी। तो इसी तरह आउटपुट का भी शॉर्ट मेथड भी है, दिस इज द शॉर्ट मेथड। आउटपुट कमांड को लिखने का हरीम, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म कि मैं सिर्फ आउटपुट का कीवर्ड लिख दूं इन ऑल कैप्स, ठीक है, और मैं सम का वेरिएबल लिख दूं, ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म। अब मुझे बताएं, लेट्स से आप यूजर थे, आपने num1 एंटर किया 7, num2 एंटर किया 2, सो इस लाइन की वजह से यूजर को आउटपुट स्क्रीन पर क्या शो होगा?
जी हरी बताइए बेटा. Sir, can you repeat your question? I was saying, let's say user has given the value of 7 as number 1. The user has given the value of 2 as number 2. Then because of this line की बात कर रहा हूँ, output sum. Because of this line, what user will be looking into the output screen? What result he will be getting? 9. 9. अच्छा, अगर हमने ये शॉर्ट पे लिखा आउटपुट का सम तो उसको सिर्फ 9 मिलेगा. बट देर इज लॉन्ग मेथड ऑफ आउटपुट कमांड एज वेल. अगर मैं लिखूं आउटपुट, देन आई विल राइट द मैसेज फर्स्ट, द सम ऑफ टू numbers is inverted comma close, then I put comma, then I have written the variable sum. Now tell me, if I write the output in this form, what output he will be getting on the output screen? The sum of two numbers is 9. Exactly. So this, जिस तरह मैंने आपको इनपुट फॉर्म के इनपुट कमांड के 2-3 मेथड बताया और रिकमेंडेड बताया, इसी तरह आउटपुट का भी रिकमेंडेड मेथड ये वाला है कि यू आर रिकमेंडेड टू यूज दिस वन बिकॉज इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जा रही है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज, जो भी वैल्यू है 9 ये जो भी. जबकि शॉर्ट मेथड में सिर्फ वैल्यू सम उसको शो हो जाएगी. ठीक है. सो आज की क्लास में फिर हम हरी बेटा यहीं तक रखते हैं. अभी आप जाइएगा नहीं. लेट मी राइट वन थिंग इन माय रिकॉर्ड कि हमने आज कहाँ तक काम कर लिया. मैं अपने पास अपनी स्प्रेडशीट पे लिखूं जरा, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर हमें याद रहे कि लास्ट हमने काम कहाँ तक और क्या कर लिया. Okay, sir. अच्छा, अब आपका होमवर्क ये होगा छोटे से. मैं आपको सिर्फ ओनली आई विल बी गिविंग यू 2 to 3 स्मॉल क्वेश्चंस ऑफ दिस लेवल. जैसा हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम अभी बनाया, इसी तरह के बेसिक कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको बनाने को दूंगा. ओनली 3 to 4. ठीक है. उनका आप सूडो कोड अपने पास लिख के ऑन पीस ऑफ पेपर मुझे पिक्चर आप व्हाट्सएप कर देना. ठीक है. एक सेकंड जरा रुकिएगा. The date is 2nd of June. अच्छा, आज की क्लास में हरी हमने क्या क्या किया? कैन यू टेल द नेम ऑफ दोस टॉपिक्स? वी हैव डन PDLC, we have done variables, constants, data types, declarations, initialization, input and output command. ठीक है. We are done till here. All right. So I will be giving you only 3 to 4 small. I will be sending 3 to 4 very small sort of questions. The type of questions that we have done so far. अभी तक हमने जैसे एक क्वेश्चन किया है उसी लेवल का वो होगा. So just try to complete it before tomorrow's class. ठीक है. Any questions Hari you want to ask? Please ask me. No, sir. चल ठीक है. Thank you बेटा. Take care. Bye sir. Talk to Okay, you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.